बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर सीरीज़ है फॉर द टॉफल लर्निंग फॉर द बिगनर्स। इसमें हम डिफरेंट अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ले रहे हैं ताकि हम इस एग्ज़ाम में जब भी अपेयर हों या अदरवाइज़ भी हम इंग्लिश लिखें या बोलें तो हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो और हम मैक्सिमम ग्रामेटिकली करेक्ट हों, बी इट लाइन राइटिंग और लिसनिंग और राइटिंग फॉर दैट मैटर। ये लेसन 10 में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को स्टडी करेंगे। हम इससे पहले पास्ट में सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस को स्टडी कर चुके हैं, प्रेजेंट को हम कंटिन्यू स्टडी कर चुके हैं। सो लेट्स स्ट्रेट जंप इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका स्ट्रक्चर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला होगा उसमें आपके पास सब्जेक्ट होगा फॉलोड बाय हैड। इससे पहले आपको याद होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ और हैव इस्तेमाल करते थे, डिपेंडिंग कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ इस्तेमाल होगा और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव इस्तेमाल होगा। बट इन केस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस आपके पास सिंपल एक सिंगल ऑक्सिलरी है जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, विच इज़ हैड। दिस विल बी फॉलोड बाय वर्ब इन द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म विच इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो इट्स अ सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन केस ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम देख लेते हैं कि हम पास्ट परफेक्ट का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं उसमें फार्मूला के अलावा हम ये कब डिसाइड करते हैं कि हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। तो पहला इसमें एग्जांपल ये है कि as per rule an action that happened before another action in the past, there usually are two actions in the sentence. तो अगर आपके पास दो एक्शंस सेंटेंस हुए हैं, एक्शन हुए हैं आपके सेंटेंस में जो कि माजी में हुए हैं, तो जो एक्शन पहले हुआ है दैट विल बी लेबल्ड और विल बी यू राइट एज पास्ट परफेक्ट टेंस। देख लेते हैं कैसे। जॉन हैड गॉन टू द स्टोर, ये एक एक्शन है। बिफोर ही वेंट होम, इट्स अ सेकेंड एक्शन। अगैन जॉन हैड गॉन टू द स्टोर, अगैन अगर आप फॉर्मूला का स्ट्रक्चर देखें तो जॉन इज़ अ सब्जेक्ट, हैड इज़ यूज्ड व्हेन इट कम्स टू अ पास्ट पार्ट परफेक्ट टेंस, गॉन इज़ अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो दिस इज़ द फर्स्ट एक्शन कि जॉन स्टोर जा चुका था बिफोर ही वेंट होम, इससे पहले कि ये घर जाता। सो जो आपका फर्स्ट एक्शन होगा दैट विल बी पास्ट परफेक्ट एंड द सेकेंड एक्शन विल बी सिंपल पास्ट। अगर दो एक्शंस माजी में हुए हैं तो जो एक्शन पहले हुआ है दैट विल बी पास्ट परफेक्ट एंड द अदर एक्शन विल बी सिंपल पास्ट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैक टोल्ड अ स्टोरी दैट ही हैड विजिटेड इंग्लैंड 1970। सो जो विजिट हुआ है वो 1970 में पहले हो चुका है। सो विजिट हैपन्स टू बी द फर्स्ट एक्शन। सो इसलिए हम इसको हैड विजिटेड करके फर्स्ट एक्शन है तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में शो करेंगे। और जैक टोल्ड अस यस्टरडे, तो ये सेकंड एक्शन जो बाद में हुआ है तो इज सिंपल पास्ट टेंस। तो अगर हम इसको टाइमलाइन में शो करें तो पास्ट परफेक्ट में आपके पास फर्स्ट एक्शन होगा, सिंपल पास्ट कम्स सेकंड एक्शन एंड देन यू आर टॉकिंग अबाउट इन द नाउ। इन प्रेजेंट में आप बात करें तो नाउ इज़ द प्रेजेंट। सो अगर आप माजी में मौजूद होने वाले दो एक्शंस के बारे में बात करेंगे तो जो एक्शन पहले हुआ है दैट विल बी मेंशन इन पास्ट परफेक्ट फॉर्म, जो एक्शन बाद में हुआ है दैट विल बी सिंपल पास्ट फॉर्म एंड यू आर टॉकिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। कुछ और डिटेल्स देखते हैं इसके बारे में। व्हाट आर द यूजेस वी यू हैव फॉर द पास्ट परफेक्ट। एक तो हमने पहले बात कर ली, फिर इसके अलावा यूज में ही कि द पास्ट परफेक्ट इज यूजुअली यूज्ड विद बिफोर, आफ्टर और व्हेन। इन तीन लफ्ज़ के साथ हम पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस कॉन्टेंट्स यूज़ करते हैं। स्टडी दीज फॉर्मूला एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ दीज एक्शंस। पहले आप ये देख लें कंडीशंस में जिसमें आपके पास बिफोर है, आपके पास आफ्टर है और व्हेन। इन तीन कंडीशंस में आपने इन पास्ट परफेक्ट में कैसे प्ले करना है। सो पहली कंडीशन में आपके पास सब्जेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है और आपने कंडीशन बिफोर यूज़ करनी है, और सेकंड सब्जेक्ट है और सिंपल पास्ट। ये तो सिंपल आपके पास फॉर्मूला स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास दो एक्शंस हुए हैं तो दो सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। और अगर आपने बिफोर की कंडीशन यूज़ करनी है तो आपने क्या करना है कि आपने दोनों कंडीशंस को बिफोर से ब्रेक करना है। जॉन हैड गॉन टू द स्टोर, ये वही एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये फर्स्ट एक्शन था जो पहले हो चुका था तो हमने इसको पास्ट परफेक्ट में यूज़ किया है। सो जॉन हैड गॉन टू द स्टोर बिफोर ही वेंट होम। सो इस कंडीशन में हमने ये बता दिया कि आपने बिफोर यूज़ करना है तो आपने उसको सेकेंड एक्शन से पहले यूज़ करना है। इसको लिखने का और तरीका ये है कि आपने बिफोर पहले लिख लिया, सब्जेक्ट और सिंपल पास्ट टेंस को आप पहले लिख लें और आपका जो पास्ट परफेक्ट जो एक्शन बाद में हुआ पहले हुआ है उसको आप आखिर में लिख दें। तो इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा कि बिफोर ही वेंट होम ही हैड गॉन टू द स्टोर, बिफोर जॉन वेंट होम। सो इसमें ये होगा कि आपका सेंटेंस का
अगर आपने बिफोर का वर्ड पहले इस्तेमाल करना है तो आपके पास सिंपल पास्ट टेंस पहले आएगा एंड जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है वो आपके पास बाद में आ जाएगा. सो दैट्स हाउ यू प्ले यूजिंग दीज टू वर्ड, द वर्ड बिफोर इन द पास्ट परफेक्ट टेंस. अगर हमने बात की थी कि हम बिफोर, आफ्टर और व्हेन को अगर पास्ट परफेक्ट में यूज़ करें तो उसका किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा. सो वी स्पोक अबाउट बिफोर ऑलरेडी. इट्स सेकेंड विच इज़ आफ्टर. आफ्टर में आपके पास भी 2 कंडीशंस होंगी. एक तो ये है कि आपने सब्जेक्ट और सिंपल पास्ट मौजूद है, उसके बाद आपने आफ्टर लिखा और फिर आपके पास सब्जेक्ट और पास्ट परफेक्ट है. इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि जॉन वेंट होम विच इज़ अगेन सिंपल पास्ट आफ्टर ही हैड गॉन टू द स्टोर. सो ये एक्शन चूँकि पहले हुआ था तो हमने आफ्टर का वर्ड इसके बाद कर लिया. और अगर आपने आफ्टर पहले सेंटेंस में लाना है तो आप इस पूरे पार्ट को, इस स्ट्रक्चर को पहले ले आएँ. आफ्टर प्लस सब्जेक्ट देन पास्ट परफेक्ट followed by simple subject followed by subject with a simple past tense. So the structure will be after John had gone to the store he went home. So depending, अब अगर इसमें जुमले की जो सेंस है वो दैट मेक सेंस, और कि कौन सा काम पहले हुआ है, तो जो काम पहले हुआ है वो आपने पास परफेक्ट में रखना है और जो काम बाद में हुआ है माजी में वो सिंपल पास्ट है. वी स्पोक अबाउट बिफोर, वी स्पोक अबाउट आफ्टर. नाउ अब हम बात करते हैं कि इनमें जो चीज़ आपको डिटेल में आपको याद रखनी है. द एडवर्ब व्हेन कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ बिफोर और आफ्टर इन एनी ऑफ दीज 4 फार्मूलाज विदाउट चेंजिंग इन द मीनिंग. हमने बिफोर के 2 फार्मूलाज स्टडी किए, हमने आफ्टर के 2 फार्मूलाज स्टडी किए. सो जो थर्ड कंडीशन है वर्ब विच इज़ व्हेन, इट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ बिफोर एंड आफ्टर इन एनी ऑफ दीज 4 फार्मूलाज. इसमें आपकी मीनिंग में कोई चेंजेस भी नहीं होंगी. वी स्टिल नो विच एक्शन हैपन फर्स्ट एंड ऑफ द यूज़ ऑफ द पास्ट परफेक्ट. हमने चूँकि पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल किया तो हमें ये तो क्लैरिटी है कि माजी में कौन सा काम जो है वो पहले हुआ है. सो द ऑर्डर ऑफ एक्शन वी नो बिकॉज वी हैव यूज पास्ट परफेक्ट टेंस. A state which continued for a time in the past but stopped before now, that's where we past perfect use. Note that there is no connection with the present. For example, Henry had lived in the New York for 10 years. Now had lived is a past perfect tense. Before he moved to California. So before he moved to California is a second action. The previous action was he was living in the New York. So for 10 years he was living in New York. Then he moved to California. And ये सब बातें हो चुकी हैं पहले ही. So in the present moment we don't know where he actually is, be it California or where. But he has moved from New York much earlier. So ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब आप माजी का कोई एक्शन जो कि ख़त्म हो चुका है, बिफोर वी आर स्पीकिंग राइट नाउ, दैट वेयर पास्ट परफेक्ट tense actually jumps in. This was all about past perfect. Let's jump into the past perfect continuous tense. So this past perfect concept can also be conveyed by the past perfect continuous or past perfect progressive. Study these formulas. We know that for the simple past tense we have subject, had and verb, but here we have subject, had followed by been and then verb in ing because it's a continuous form. So example can be Henry had been living in New York for 10 years before he or she probably moved to California. So something which was happening in the past and हम इसको डिपिक्ट शो कर रहे हैं विद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसकी कुछ एग्जाम्पल्स को हम रिव्यू करते हैं. द प्रोफेसर हैड रिव्यूड, अगेन दिस इज द पास्ट परफेक्ट, द मटीरियल बिफोर ही गेव द क्विज. सो द giving the quiz was a later action. The initial earlier action was reviewing the material. Second example is after Henry had visited Puerto Rico, he went to St. Thomas. So the visit to St. Thomas was second action. So it is a simple past tense. The initial action with earlier action was meeting or going to visiting to Puerto Rico. So it is had visited. It's a past perfect. Third example is before Ali went to sleep, he had called his family. So हमने यहाँ पे before की condition इस्तेमाल की है. We used after initially. इसमें हमने Ali went to sleep, which is a simple past tense, followed by he had called his family. So the calling to family was the initial action or the earlier action. So this is the past perfect tense. George had worked at the university for 45 years before he retired. It's a sentence structure where had worked shows the past perfect tense, which means he worked at the university before for 45 years and he got retired. So in the present moment he has retired already. So this was all about the events happened in the past. Few more examples.
George had been working at the university for 45 years before he retired. It's about past perfect continuous. After the committee members had considered the consequences, they voted on the proposal. Another example, the doctor had examined, again past perfect, the patient thoroughly before he prescribed the medication. Simple past. So just keep on track और the flow of thoughts के इसमें आपके पास past perfect तब है जब action पहले हुआ है माजी में और simple past second action है. हम एक्सरसाइज 10 को स्टडी करेंगे जिसमें हम सिंपल पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ करेंगे जो हम अभी तक स्टडी करके आए हैं. और आपको मैं काइंडली एक बार रिमाइंड कर दूं कि आप अपने जितने भी आपके फार्मूलाज आपने अभी तक पढ़े हैं पहले उन्हीं को यूज़ कीजिएगा और अपने ब्रेन सेल्स को पहले एक्सरसाइज कीजिएगा ताकि आपको क्लैरिटी हो और फिर उसके बाद हम जंपिंग करेंगे. ये हमारी एक्सरसाइज की शीट है जिसमें हमारे पास 10 सेंटेंसेस हैं विद ब्लैंक्स जिनको आपने ईदर सिंपल पास्ट और या पास्ट परफेक्ट से फिल करना है. आई वुड सजेस्ट यू ऑल के काइंडली पॉज करें इस वक्त और अपने जो फार्मूलाज हैं अपने नोट्स हैं उनको रिविजिट करें, रीड थ्रू करें और इन ब्लैंक्स को फिल करें. वंस यू आर डन देन यू कैन जंप इनटू आंसर्स डायरेक्टली. सो फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी completed their exercises we can jump into the answers now. The first question sentence was the policeman read the suspect his rights after he had arrested him. So of course policemen are supposed to arrest the criminal first. So had arrested before, so this is the past perfect tense, and had or read the suspect before, second action. So this is a simple past. Second question, after John had washed his clothes he began to study. So the study was the second action. The first action was washing clothes, so this is a past perfect tense. Third question, George had waited for 1 hour before the bus came. So the bus came later. So what was he doing before? He was waiting. So this was the first action. So first action in the past happens to be past perfect. Question 4 says Maria entered the university after she had graduated from the community college. So the graduation in from the community college was the first action, so it was a simple past tense. It was past perfect tense, and entering the college was the second action, so this is a simple past. Question 5 is Janet washed the pipettes after she had completed the experiment. So experiment completion was the first action, so this is had completed, past perfect tense, and second action is washing, so this is a simple washing which is washed, simple past tense. Question 6 says Jane sent a letter to her university after she had received her scholarship check. So scholarship check receiving was the first action, so it is past perfect, and the initial action was receiving a letter, so this is a simple past tense, second action. Question 7 says after these stewardesses had served lunch to the passengers they sat down. So they were serving before, so this is past perfect tense, and they sat down later, which is a second action. It is a simple past tense. Question 8 is car had flipped 10 times before it landed on its roof. So the landing was a second action. Initially it was flipping around, so it was past perfect, is a had flipped. Question 9, we corrected our papers after we had taken the quiz. So we corrected later, so this is a simple past tense. What we were doing before, we were taken, so had taken is a past perfect. Question 10 says John had lived in Miami for 1 year when his parents came to visit. So this was his living before in Miami. Was living in the Miami was the first action, initial action, so it has to be past perfect. For 1 year he lived there, so it's a past event, and his parents has visited him already, so this is a past, simple past tense. So this is where we come to an end to this exercise. I would suggest you all to kindly have note of everything you write, और जितने भी एक्सरसाइजेज हों आप इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली आंसर्स पे जंप ना करें, पहले अपनी ब्रेन मेमोरी सेल्स को एक्सरसाइज करें. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक माय वीडियोस एंड दिस सीरीज ऑफ TOEFL learning for the beginners, kindly subscribe this video, like and share with your other fellows. Thank you for watching.